Okay, dear students, today we will discuss about class 7 a interesting poem Meadow Surprises. Walk across the green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? Dear students, here the poet describes his mentality cleanly and beautifully, and he speaks that walk across a green field. If you get a chance to walk across a green field और एक पार्क और इवन ऑन ए क्लॉम्प ऑफ ट्रीज, एक पेड़ जंगल फॉरेस्ट के अंदर तो अगर तुम कभी चांस पाओ जाने के लिए, यू विल नोटिस, यू विल फाइंड मैनी वंडरफुल थिंग्स. बहुत सारे वंडरफुल थिंग्स तुम देखने के लिए पाओगे. व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइजेस? उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस भी है. ए मीडो हैज़, मीडो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी रखता है. फॉर समवन, but not for everyone, but for someone with a keen eye and a sharp ear. The person who has a keen eye and a sharp ear, he only able to see the meadows surprises. Okay students, now come to the topic. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Dear students, here the writer says that meadow have surprises. मीडो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस रखता है. यू कैन फाइंड देम, तुम उसको पा सकते हो, ढूंढ सकते हो. इफ़ यू लुक, इफ़ यू गिव सम अटेंशन, इफ़ यू गिव ए लिटिल अटेंशन. वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास. अगर तुम वो जो वेलवेट, वो जो सॉफ्ट ग्रास के ऊपर अगर स्लोली, क्वाइटली एंड सॉफ्टली तुम जाओगे. एंड लिसन बाय द ब्रुक, एंड लिसन द म्यूजिक, द मोनोटोन म्यूजिक ऑफ द ब्रुक. ब्रुक मीन स्ट्रीम, माउंटेन, झरना. एंड यू विल बी एबल टू सी ए बटरफ्लाई. तुम एक बटरफ्लाई को भी देख सकते हो. रेस्ट ओपन ए बटरकप, जो कि बटरकप इसका मतलब फ्लावर, फ्लावर के ऊपर रेस्ट कर रहा है. एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, ये इसका स्ट्रॉज को अनफोल्ड कर रहा है. क्यों करके रखा है? क्यों? टू सिप द नेक्टर ऑफ, जो बटरकप में जो नेक्टर है उसको अप, ऊपर लाने के लिए वो उसका ड्रिंकिंग स्ट्रॉज को अनफोल्ड रखा है. फोल्ड नहीं किया है. अगर फोल्ड करेगा तो कैसे वो जो नेक्टर को ऊपर लाएगा? यू मे स्केयर ए रैबिट. तुम मिडो में और बगीचा में एक रैबिट को भी तुम डरा सकते हो. हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत नीरव से, क्वाइट से, स्टिल होकर बैठा है. ओके. एंड अगेन राइटर थिंक दैट though at first you may not see him, when he hops you will. though, जदियो, शायद, at first में सर्वप्रथमे, you may not see him, तुम उनको देख नहीं सकते, देखने के लिए पॉसिबल नहीं, एबल नहीं हो सकते. क्योंकि when he hops you will, जब वो हॉप्स करेंगे, जैसे हम इंसान का जो मूवमेंट है उसको वॉकिंग कहते हैं, उसी तरह से जो रैबिट का मूवमेंट है उसको हॉप्स कहते हैं. व्हेन ए रैबिट हॉप्स यू विल मीन यू विल बी एबल टू सी ए डैंडेलियन मीन ए ब्राइट येलो फ्लावर हुज फॉजी हेड वाज गोल्डन डेज एगो. ए डैंडेलियन, ए गोल्डन ब्राइट एंड येलो फ्लावर. नाउ it gets matured and has turned to airy parachutes, and the upper layers of the dandelion, of the yellow flower, becomes parachutes, and that flutter mean hither and thither, here and there. When you blow, when the air blows, the parachutes, that means the upper layer of the dandelion, okay, flutter hither and thither, इधर and उधर घूम रहा है. okay, उड़ रहा है, blowing कर रहा है. okay. So here the writer says the line very beautifully, and write this line very beautifully. Though at first you may not see him, when he hops you will. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. Okay dear students, now this stanza is quite difficult, little difficult, not quite difficult. And dandelion whose fuzzy head, like a yellow flower
जिसका फजी हेड मीन जो इट गेट्स मेच्योर्ड and it is now it is old and golden days ago it was beautifully appeared in front of the viewers and has turned to airy parachutes as its time passed is turned into its upper layers separated from the dandelion and flutter इधर उधर घूम रहा है इधर इधर blowing कर रहा है when air blows जब एयर ब्लोइंग कर रहा है ओके नाउ द राइटर एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस एक्सप्लोर मीन डिस्कवर इन्वेंट डिस्कवर इज करेक्ट आई थिंक एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस मीडो में जो हाउसेस है उसको अभी राइटर एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर कर रहे हैं ओके व्हिच हाउसेस द बोरोज इन द ग्राउंड में जो बोरोज है होल है एंड नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस जो टॉल ट्रीज है उसके बीनीथ मीन अंडर जो नेस्ट है होल है द आंट्स अमेजिंग माउंड व्हाट इज माउंड मूवमेंट ऑफ आंट्स मूवमेंट ऑफ रैबिट इज हॉप्स एंड मूवमेंट ऑफ आंट इज माउंड द आंट्स अमेजिंग इंटरेस्टिंग वंडरफुल एंड earth-sing mound oh meadow have surprises meadow have many surprises and many things to tell meadow as meadow is speechless it is a non-living thing but it has many things to tell you may discover these yourself okay you may discover these yourself तुम इसको खुद डिस्कवर कर सकते हो एक्सप्लोर कर सकते हो if you look and listen well if you have a sharp eye and a sharp ear keen interest okay thanks for watching okay